The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hi everyone, welcome to the webinar. And before we go forward, please, as usual, confirm if I'm audible and if my screen is visible to you all. हम लोग वेबिनार स्टार्ट करने के पहले एक बार आप मुझे कंफर्मेशन दे दो चैट बॉक्स में या फिर क्वेश्चन बॉक्स में कि आपको मेरी आवाज आ रही है और मेरी स्क्रीन आपको परफेक्टली विजिबल है या नहीं. सो वी कैन स्टार्ट ऑफ द वेबिनार. Okay, so I have got some confirmations. मुझे कुछ confirmations मिले हैं कि everything is working fine. So we can start off. आज का webinar एक बहुत important topic पे है और it is not going to be a very long webinar. It's probably going to be a 30 minutes or 35 minutes webinar, but it's a very, very important topic. And I know you आप लोग को ये हिंदी और इंग्लिश मिक्स चाहिए. I will take care of it. कभी भी अगर आप कोई इन्वेस्टर है या फिर आप कोई ट्रेडर है, कोई भी स्टॉक या फिर इंडेक्स अगर अप ट्रेंड में है, ऊपर ऊपर जा रहा है और आपको आपकी एंट्री मिस हुई है, तो आपको एंट्री करने के लिए कुछ एक कंफर्मेशन चाहिए होता है, राइट? आपको ये लगता है कि इससे ऊपर पता नहीं ये जाएगा या नहीं जाएगा, करेक्ट? इवन इफ यू आर अ इन्वेस्टर और इफ यू आर अ ट्रेडर, if you want to enter in some rally whenever the stock is going up or if the index is going up, whatever the entity is, if it is going up and if you have missed your entry, you need some confirmation, right, that it will still keep going on upside, correct? So in such conditions, what do? आपको कुछ confirmation चाहिए. So in this situation, if you get a very nice tool, for example, if it is a volume and if you learn how to take the confirmation from volume, wouldn't it be great, right? So in today's webinar, we are going to learn the volume analysis. It will help you in your investing journey. It will help you in your trading journey. All right, you can apply it on any time frame. So we will learn the volume analysis in today's webinar. All right, so we will go forward. And as usual, I will read a standard disclaimer to you all. The content and explanation shared in this webinar are only for information and educational purpose. Stock market trading and investment are subject to market risk. Please consult your financial advisor before making financial decisions. All right, so let's go forward. Before even talking about volume analysis, what is volume? हम लोग वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में बाद में बात करेंगे, बट वॉल्यूम क्या है? एक वॉल्यूम मतलब क्या? कोई भी स्टॉक है, इंडेक्स है या फिर कोई भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शन है, फ्यूचर है, तो एक वॉल्यूम मतलब क्या होता है? तो इसका सिंपल आंसर है, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी शेयर्स है, जितना भी एक्सचेंज हो रहा है, वो आपका वॉल्यूम है. मतलब अगर एक शेयर का ट्रेडिंग हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेडिंग हुआ, वो एक्सचेंज हुआ, राइट, फ्रॉम द बायर टू सेलर, सेलर टू बायर, तो वो एक वॉल्यूम हुआ आपका. ओके, जैसे ओपन इंटरेस्ट में ओपन इंटरेस्ट का नंबर निकालना इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग. वॉल्यूम ऐसा नहीं है, वॉल्यूम इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है, जो भी एक्सचेंज हो रहा है ऑफ स्टॉक या फिर आपका जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, दैट पर्टिकुलर नंबर इज योर वॉल्यूम. ऑलराइट, तो आपका जो वॉल्यूम है वो हर टाइम फ्रेम में आप चेक कर सकते हो. इट कैन बी इवन 1 मिनट, इट कैन बी इवन 1 मंथ, इट कैन बी इवन 1 आवर, any time frame you can use. So for all that time frames, your volume will be respective. Okay, so let's go forward. Now what is volume analysis? Volume analysis क्या है? So volume analysis is the examination of volume associated with a particular asset such as stocks to gain insights into market dynamics and potential price movements. तो volume analysis और कुछ नहीं है, बस volume का study करना होता है. किस लिए? कि market के dynamics आपको जानने हैं और जो भी मार्केट में प्राइस मोमेंटम क्या एक्सपेक्टेड है उसके आगे, वो जानने के लिए जो भी हम वॉल्यूम का स्टडी करते हैं, अलग अलग टूल्स यूज करके हम लोग वॉल्यूम एनालिसिस के लिए वॉल्यूम चार्ट लगा सकते हैं या फिर कोई और इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं. तो उस विथ the help of all those tools, whatever we study is our volume analysis. Okay, as simple as that. So we will go forward. Now, why volume matters? इतना सब स्टडी करने के पहले ये जानना जरूरी है कि वॉल्यूम आपको कहाँ पे हेल्प करता है.
या फिर आपको वॉल्यूम स्टडी करना क्यों जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट, मार्केट लिक्विडिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ट्रेडिंग करने जाते हो या फिर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो, अगर उस पर्टिकुलर एंटिटी में ये लिक्विडिटी नहीं है तो आपका जो एग्जीक्यूशन होगा वो स्मूथ नहीं होगा। ओके, हायर वॉल्यूम जनरली इंडिकेट्स ग्रेटर लिक्विडिटी, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ लार्ज प्राइस स्विंग्स। if there is no proper liquidity, आपका जो swing होगा ना, because there will be a gap into the bid and ask price, correct? So it will cause the wide swings into the prices. All right, so whenever there is a good liquidity, it will help you to have a good execution into that particular stock or any entity. So volume से हमें liquidity पता चलती है, ठीक है। Second, price confirmation. High volume validates significant price changes, while low volume may indicate lack of conviction. जब भी कोई स्टॉक या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव्स का, whenever there is a good demand of that particular stock or entity, obviously there will be good volume, correct? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उसमें डिमांड है तो ज्यादा पार्टिसिपेशन उसमें होगा, तो उसी का मतलब है कि उसमें यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड प्राइस चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर एंटिटी, correct? But if the volume is low, what will happen? What does it mean if the volume is low? It means that simply there is no demand, correct? Or there are not many people who are interested into that particular entity. That is the simple meaning, right? So if there is no a proper volume, or if the volume is below average, it means that you should not expect very good momentum in that particular entity. So whenever you are planning your trades, you can simply look at the volume, correct? And if the volume is low, you can switch to some other entity. If the volume is very good, you will know that you're going to find out some very good opportunities, very good trading opportunities in that particular entity, correct? Now the last is spotting accumulation and distribution phases. Accumulation क्या होता है? Accumulation ये होता है कि जब भी इसमें हमें प्राइस और वॉल्यूम दोनों चीजें देखनी होती है, ठीक है। So whenever the price is staying range bound, or if the price is staying flat, okay, just give me a moment. Okay, I'm sorry about that. I just thought that the charger is connected, but it was not. So what is accumulation? Accumulation में क्या होता है कि प्राइस आपका स्टैग्नेंट रहेगा, एक रेंज में रहेगा, बट वॉल्यूम आपका एडअप होता जाएगा, वॉल्यूम काफी ज्यादा रहेगा। उसका क्या मतलब होता है कि जो स्मार्ट मनी है, दे आर मेकिंग पोजीशंस इनटू दैट पर्टिकुलर एंटिटी, ओके। एंड व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? Distribution is when your price is staying in a range bound manner. It is, if you only look at the price, it will not tell you anything, ठीक है, in the accumulation and into the distribution also. But if you look at the volume into distribution, volume keeps going down. Okay, what does it mean? That big traders or the smart money is taking out the position of that particular entity, or they are offloading. तो इसका क्या मतलब होता है? accumulation जब होता है, accumulation के बाद एक अच्छा upwards momentum आना expected होता है, क्योंकि there are some big traders who have entered in that particular range, or there is there is something called smart money, so they have entered into that particular entity, and because of that, because of all that volume, now you can expect a very good upwards momentum. What happens into the distribution? डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि बड़ा पैसा उसमें से निकल चुका है ऑलरेडी, तो उसमें या तो वो एंटिटी रेंज बाउंड हो जाएगा, या तो फिर उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, या फिर थोड़ा सा डाउनवर्ड मोमेंटम आ जाएगा, बिकॉज नाउ देयर इज नॉट वेरी गुड डिमांड इनटू दैट, ओके। सो ये आपको स्पेसिफिकली वॉल्यूम से पता चलता है। अगर आप सिर्फ प्राइस को देखोगे तो आपको ये इसका क्लियर आइडिया नहीं आएगा, बट इफ यू कंबाइन प्राइस अलोंग विद द वॉल्यूम, it will help you a lot. Okay, so this is how volume is very important whenever you are participating into the market, even if you are an investor or a trader, it does not matter. So how to read volume? First question, correct? Now if you can see this particular screenshot, ये जो candles है ये अपने price के candles है, और
ये मैंने वॉल्यूम चार्ट लगाया. इफ यू आर यूजिंग चार्ट IQ in the studies, you have to go and you have to select volume chart. If you're using trading view chart, you have to simply go into the studies and you have to select volume. Okay, दोनों में मिल जाता है. So ये मेरे प्राइस के कैंडलस्टिक्स है और ये मेरा वॉल्यूम है. ठीक है. So right now here if you can see it's a 15-minute chart. So every volume bar tells me the volume of those particular 15-minute candlesticks. ठीक है. ये जितने भी वॉल्यूम बार्स है ये भी 15 मिनट के हैं और वो रिस्पेक्टिव कैंडलस्टिक में या फिर वो रिस्पेक्टिव टाइम फ्रेम में कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ वो मुझे ये वॉल्यूम बार्स बताएंगे. ठीक है. नाउ वॉल्यूम बार्स जैसे कि अपने प्राइस के कैंडल्स रेड और ग्रीन होते हैं, वॉल्यूम बार्स भी रेड और ग्रीन होते हैं, बट वॉल्यूम बार्स के कलर से आपको उतना मैटर नहीं करेगा, आपको कैंडलस्टिक का कलर मैटर करेगा. ठीक है. So whenever you are looking at the volume, you only have to be focused upon how big is the volume, okay, and not on the color. All right. So अभी ये आप एक if you can see this box in this, ये 15 मिनट का ये जो कैंडल है of 3 PM, इसका आप अगर नंबर देखोगे ये 758K है. इसका मतलब the volume in this particular candle or volume in this particular 15-minute time frame was 758K. Okay, this is how you read the volume. So volume represents the total number of shares bought and sold during a given period of time. It can be day, week, or even minutes. Okay, volume in stocks is measured by the number of shares traded. One thing. And volume in futures and options is determined by the number of contracts traded. Okay, उसमें आपको shares देखने को मिलते हैं, इसमें आपको contracts मिलते हैं, इतना ही difference है. Okay, let's go forward. Now, इस पर्टिकुलर वेबिनार में हम लोग वॉल्यूम का यूज कैसे करेंगे. फर्स्ट है कि हमारा जो ट्रेंड कंफर्मेशन है, ट्रेंड कंफर्मेशन हम लोग वॉल्यूम के हेल्प से कैसे करते हैं वो देखेंगे. Okay, we are going to learn how do we get the confirmation of a trend with the help of volume. Okay, first thing is that. Next is when the particular entity can take the resistance or the support, that we will see. Lastly, we are going to see how the breakout and breakdowns are traded with the help of volume. Okay, and lastly we will see one indicator of volume. With the help of that we'll see how do we trade and how do we find the entry exits and stop losses. So इसके हमने 4 पार्ट देखने हैं. So whenever we are going to look at the volume, obviously we have to look at the price as well. So price और volume को combine करके 4 categories बनते हैं कि उससे एक particular outcome निकल के आता है. Okay, so when the price is going upwards, okay, when the price is increasing and the volume is also going up, what does it mean? You can get the bullish outcome. Okay, it means that the trend is bullish. Okay, when the price is increasing but the volume is going down, what does it mean? It means that now the people who were participants into that particular uptrend, now those are booking profits. Now they are taking the exit. Now the steam is over from that particular trend. So which is why whenever the price is going upwards but the volume has exited, so that particular price can take the resistance on the upwards level. Correct? So this will show you the resistance. Next, the price is decreasing and the volume is going up. Okay, अब आप इमेजिन करो कि प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है. इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है कि बेरिश मोमेंटम आने वाला है. ओके, whenever the price is going down and the volume is going up, it means that there are more and more selling pressure is generating. Okay, which means that the bearish momentum will still keep continued. All right, now last, the price is also decreasing and the volume is also decreasing. So in that condition it will take a support at the base. Okay, so I will give you an example, live examples. I have taken the screenshots and we will see how does it actually happen and how do we spot on the charts. All right, now in this particular stock what is happening, can you spot that? See, the price is nicely going upwards. आप अगर ये ट्रेंड देखोगे ये बहुत ही अच्छा upwards ट्रेंड है. ठीक है, अगर
आप अभी वॉल्यूम देखोगे, वॉल्यूम में ये जो आपका एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज वॉल्यूम से ये जो भी whenever there is a price giving a spike, volume is also giving spike and it is way more than the average volume. Correct? ये मैंने मार्क किया हुआ है, राइट? सो अभी यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि प्राइस भी ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि even if the price is still into the uptrend, there are more and more people who are interested into it and the demand is still there of that particular entity, so it will still keep going on. Okay, so in this condition, if you spot such kind of if you spot such kind of volume, such kind of price momentum or price action, this means that the trend will still continue and you can plan for your entries even at the higher levels. Okay, of course with the help of proper stop loss, but then even if the price is high, you can plan your entries if there is a good volume and the price is still going up. Okay, so we saw this first scenario. Now the second one. What is happening over here? Price is going up. If you can see, अगर आप यहाँ पे ये वाला प्राइस एक्शन देखोगे, ग्रेजुअली आपका ये प्राइस है वो ऊपर जा रहा है। वॉल्यूम में उसी जगह क्या हो रहा है, वॉल्यूम आपका नीचे जा रहा है, करेक्ट? सो यहाँ पे से ये जो प्राइस ऊपर जा रहा है ना, इसमें वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन नहीं है, which is why if you can observe over here, the price for a bit stayed over here, right? If you can previously हम लोग ने पहले कुछ वेबिनार्स में कैंडलस्टिक पैटर्न्स का भी स्टडी किया था, राइट? तो कैंडलस्टिक पैटर्न से भी हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होने वाला है। नाउ द प्राइस और द पार्टिसिपेंट्स आर नाउ कंफ्यूज्ड ओवर हियर, राइट? जितना नीचे से डिमांड है उतना ही ऊपर से सेलिंग प्रेशर है। ये आपको डोजी दिख रहे हैं, डोजी आपको वही इंडिकेट करते हैं। तो प्राइस एक्शन से भी यही कंफर्म हुआ, करेक्ट? वॉल्यूम भी आपका डाउन हो गया, राइट? एंड सेम वे सिमिलरली आपका जो प्राइस है उसने ये पर्टिकुलर लेवल पे रेजिस्टेंस ले लिया, करेक्ट? सो दिस इज हाउ वी टेक द कंफर्मेशन फ्रॉम द वॉल्यूम। अब यहाँ से अगर आप देखोगे, ये रेजिस्टेंस तो लिया ही लिया, लेकिन वहां पे वो रेंज बाउंड नहीं हुआ, वहां से फॉल स्टार्ट हो गया, राइट? तो अब ऐसे सिनारियो में इसका यूज कहाँ हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले से इस अप ट्रेंड में पार्टिसिपेंट हो, आपके पास लॉन्ग ट्रेड है, ओके? नाउ अगर आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो आप नया फ्रेश एंट्री तो नहीं लोगे, बट अगर आप पहले से इसमें पार्टिसिपेंट हो तो आपको इतना क्लू मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे बुक करना है, करेक्ट? So at least if you do not make use of it to enter or for any other thing, at least you will get a clue to book your profits into the earlier long trade, correct? Whenever you see such kind of a structure. Now अब इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट में या फिर इस पर्टिकुलर चार्ट में क्या हुआ कि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया और रेंज बाउंड नहीं हुआ, यहाँ से इसका फॉल स्टार्ट हुआ और यहाँ ये जो है प्राइस नीचे आ रहा है और वॉल्यूम आप देखो, वॉल्यूम एवरेज से भी ऊपर जा रहा है, करेक्ट? तो इसका यहाँ पे वापस से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, करेक्ट? सो दिस इज हाउ, even if you do not initiate sometimes trades based on what you see on the screen, you will at least get a clue for the booking of your profits. Okay, now the next one, what is happening over here? The price is continuously going down, right? See, यहां से स्टार्ट हुआ, ये प्रीवियस टॉप था, यहां से आपका प्राइस नीचे जाना स्टार्ट हुआ। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में भी यहाँ पे रिलेट करते हो, if you respect the candlestick patterns, what is happening at the top? टॉप से सेलिंग प्रेशर आ गया, ऊपर में ये टेल बन गया है, ठीक है? Whenever we actually study the volume, if we combine it with the candlestick pattern study, it will give you a very good results out of it. Okay, so I personally like to combine both of these, so that is why I'm giving you the reference. So here you can see the tail is on the upside, all right, which means that the selling pressure has come down from the upside and the pressure has started basically over here on the top. Okay, so this is the first clue. Now the price is going downwards, right?
Now what is happening in the volume? Volume is going up, correct? So what does it mean? प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम में आपका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है. इसका मतलब है कि ये जो डाउन मूव है इट इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड. जो भी आपका बेयरिश ट्रेंड है वो आपका कंटिन्यू रहने वाला है. सो इफ यू आर अ ट्रेडर एंड इफ यू वांट टू टेक अ शॉर्ट एंट्री बट यू हैव मिस्ड दिस पर्टिकुलर रिवर्सल, what you can do, you can take such kind of confirmations from the volume and then you can decide your entries even you have missed the best kind of the levels for the entry. Okay, so now we will go forward. Now what is happening over here is that the price is slightly coming down. Now this is not a this is not a exactly downtrend, it is gradually coming down. Okay, because this is a daily time frame, which is why you are not seeing very wide volatility over here which is coming down, but it is gradually coming down. All right, what is happening in the volume? पहली बात तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है ही नहीं. ओके, वॉल्यूम काफी लो है और वो भी ग्रेजुअली नीचे 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 आ रहा है. यहाँ का वॉल्यूम आप देखो और यहाँ का वॉल्यूम आप देखो, राइट? वॉल्यूम भी ग्रेजुअली लो होता जा रहा है. इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब आप ये आगे का सिनेरियो अभी मत देखो, इसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं. एक तो जो भी आपका डाउन मूव है, डाउन मूव आपका कंटिन्यू नहीं होगा. ठीक है, व्हाई? बिकॉज इवन इफ द प्राइस इज गोइंग डाउन योर वॉल्यूम पार्टिसिपेशन इज नॉट कमिंग. ओके, तो ये आपका जो खोखला मोमेंटम बोलते हैं वो है ये. इसमें आपको सिर्फ एक प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है बट देर इज नॉट वाइड पार्टिसिपेशन ओवर हियर. देर इज नॉट the price action is not backed by very good volume. So which is why your downwards trend or the downwards move will not be very fast. Okay, सो ऐसे कंडीशन में अगर आप वॉल्यूम को नहीं देखोगे तो ऐसे कंडीशन में पॉसिबल होता है कि आप कोई फेक ब्रेकडाउन में फंस सकते हो. ठीक है, तो whenever you look at the volume you will see that वॉल्यूम है ही नहीं, तो हो सकता है कि ये रेंज बाउंड हो जाए. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि इसके बाद प्राइस रेंज बाउंड हो गया, या तो फिर उसके बाद यू हैव टू कीप वॉचिंग द वॉल्यूम. यहाँ पे आप देख लो प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाने लगा है और वॉल्यूम भी बढ़ने लगा. इट मीन्स दैट नाउ दिस इज द रिवर्सल फ्रॉम द डाउन साइड और दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ अप ट्रेंड नाउ. ओके, so this is how we take the confirmation with the help of the volume whenever we are looking at any kind of a price momentum. So इससे हेल्प क्या होता है कि जब भी आप कोई आपका जो बेस्ट लेवल का एंट्री होता है वो मिस हो गया और थोड़ा सा हाई लेवल पे भी आपको कोई एंट्री करना है तो आपको उसमें हेल्प होता है कंफर्मेशन के लिए. दूसरी चीज ये है कि जब भी यू ट्राई टू ट्रेड द ब्रेकआउट और द ब्रेकडाउन्स, उसमें आपको चांसेस कम होते हैं कि आप फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन में आप फंसोगे. उसके चांसेस कम होते हैं व्हेन यू टेक अ कंफर्मेशन फ्रॉम द वॉल्यूम. ओके, सो हम लोग ने यहाँ पे 4 कैटेगरीज देख लिए कि बुलिश मोमेंटम कब कंटिन्यू होगा, बेरिश मोमेंटम कब कंटिन्यू होगा, कब प्राइस आपका रेजिस्टेंस ले सकता है, रिवर्सल ले सकता है, और कब आपका प्राइस सपोर्ट लेके रिवर्सल ले सकता है. ठीक है, सो वी हैव सीन ऑल 4 सिनेरियोज ओवर हियर. नाउ वी विल सी कि आप ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं, राइट? अगर नहीं करते हैं तो आप प्रीवियस वेबिनार्स का रिकॉर्डिंग देख सकते हो. इसमें हम लोग ने चार्ट्स का भी टॉपिक कवर किया हुआ है, हम लोग ने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा है, हम लोग ने ट्रेडिंग बेस्ड ऑन सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा है. ऑलराइट, सो लेट्स नाउ इमेजिन दैट आपके चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है. अगर मान लो कि आप अभी तक वॉल्यूम देखना नहीं सीखे हो और या तो फिर आप वॉल्यूम देखते नहीं हो, ठीक है, आप सिर्फ प्राइस देख रहे हो, तो इसमें आप कैसे ट्रेड करते हैं? दिस इज योर रेजिस्टेंस, दिस इज योर सपोर्ट, राइट? नाउ पहले तो हम लोग यहाँ इसमें एंट्री कहाँ होती है वो देखेंगे. एंट्री आपकी कहाँ पे होती है? कंफर्मेशन कैंडल पे, राइट? आपका जो ये सपोर्ट है वो इस कैंडल ने ब्रेक कर लिया है और ये अपना कंफर्मेशन है. ओके, ये भी करेक्ट होता, ऑलराइट, बट इसका वॉल्यूम कंफर्मेशन हमें कहाँ मिल रहा है? इसका वॉल्यूम कंफर्मेशन हमें अभी तक यहाँ पे नहीं मिला है. दो हमारा जितने भी बार प्राइस नीचे आ रहा है हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, बट
जहां पे ब्रेकडाउन हुआ वहां पे मेरा वॉल्यूम उतना हाई नहीं हुआ है, करेक्ट, विच इज वाई इट इज अ लिटिल बिट कंसर्निंग फॉर मी एज अ ट्रेडर। तो अगर मैं ब्रेकडाउन ट्रेड करने को जाऊंगी तो हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन में जब ब्रेकडाउन आ रहा है बट वॉल्यूम नहीं बढ़ा, तो हो सकता है कि ब्रेकडाउन उतना फास्ट ना हो। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन बायर हूं तो ऑप्शन बायर तो ट्रेड उतना टाइम होल्ड नहीं कर सकता है, इट विल बिकम रिस्की, राइट। सो इन सच कंडीशंस I have to make sure as an option buyer or as a short term trader that I have to catch the fast momentum. Correct? So if I get the confirmation from volume, it will be great for me. Correct? So यहाँ पे अगर प्राइस से सिर्फ मैं कंफर्मेशन लेके एंट्री करती तो ये मेरा एंट्री होता, करेक्ट, कंफर्मेशन कैंडल के एंड पे। नाउ उसके बाद क्या हुआ, प्राइस थोड़ा नीचे आया और उसके बाद वापस से ये सपोर्ट लाइन को टच करने को गया, राइट। तो अगर यहाँ से ये थोड़ा भी ऊपर चला जाता तो मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता, करेक्ट। बट एज अ ट्रेडर हु इज लुकिंग एट द प्राइस एंड द वॉल्यूम कंबाइंडली, मेरा मेरा बेनिफिट क्या है इसमें कि मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं करी क्योंकि मेरा वॉल्यूम ब्रेकडाउन पे ज्यादा बढ़ा नहीं। तो अब मेरा एंट्री कहाँ पे होगा, अगर वॉल्यूम उसके आगे मेरा बढ़ा ही नहीं तो वॉल्यूम के हिसाब से मेरी एंट्री बनती नहीं है। बट यहाँ पे क्या हुआ, आप गौर से देखिए, इस बॉक्स में आपको देखना है ये फर्स्ट कैंडल है, ठीक है। हम लोग ने पहले क्या सीखा कि जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो भी हमें ऑब्जर्व करने हैं। तो फर्स्ट क्लू हमारा क्या है कि जब भी प्राइस वापस से रीटेस्ट करने गया इस प्रीवियस सपोर्ट को, क्या हुआ, वहां से ऊपर से जो सेलिंग प्रेशर आया, करेक्ट। मतलब अभी ये सपोर्ट, दिस पर्टिकुलर प्रीवियस सपोर्ट इज नाउ एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, करेक्ट ना। उसके वजह से क्या हुआ, ये जो नीचे से जितना भी बाइंग आया था वो ऊपर से पूरा सेल ऑफ हो गया, राइट। ये मेरा फर्स्ट क्लू है, दिस कुड हैव बीन माय फर्स्ट एंट्री पॉइंट। अब यहाँ पे मेरा वॉल्यूम भी बढ़ा है, जबकि इसका ग्रीन कलर है, तब भी मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगी, ये कलर को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगी। ये पूरा प्रेशर ऊपर से आ गया है, वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, तो दिस इज माई फर्स्ट क्लू। अगर मुझे तब भी कंफर्मेशन चाहिए, वापस से ये प्राइस इस पर्टिकुलर प्रीवियस सपोर्ट का टच करने को आया, यहाँ पे क्या हुआ, इसने वापस से रेजिस्टेंस लिया और अब ये दो वॉल्यूम कैंडल्स आप देखो, वॉल्यूम बार्स आप देखो, इतना हाई वॉल्यूम इसमें वापस से आ गया है। दिस इज माय कंफर्मेशन दैट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड डाउनवर्ड्स ट्रेंड, राइट। इसके बाद आप देख लो कि ये 700 से 500 तक चला गया स्टॉक, correct. So this is how we have to take the confirmation from the volume whenever we are trading the support and resistance or whenever we are participating into the breakouts or breakdown। जब भी आप breakout भी trade करोगे, ये तो breakdown का scene हुआ, but whenever you are going to trade the breakout as well, you will have to confirm the volumes। अब यहाँ पे आप देख लो ये resistance को touch करने जा रहे हैं, ठीक है। अब रेजिस्टेंस में मेरा कोई वॉल्यूम ही नहीं आ रहा है, राइट। तो एज अ ट्रेडर अगर मैं वॉल्यूम नहीं देखूंगी, अगर मैं सिर्फ इतना ही देखने जाऊंगी और इफ आई ट्राई टू टेक इम्पल्सिव ट्रेड्स, व्हाट विल हैपन, एवरी टाइम माय स्टॉप लॉस इज गोइंग टू गेट हिट, राइट। बस थोड़ा सा रेजिस्टेंस के ऊपर इसने इफ द प्राइस इज ट्राइंग टू गो अप, I should not enter into such kind of trades. It does not mean that it is a breakout. Correct? You have to first take a confirmation from the candlestick patterns, and second, you have to look for the confirmation from the volume as well. Okay? So this is how breakout and breakdowns with volume. Okay? Now we will go forward and we will look at the VWAP. Okay? This is indicator. This is a very beautiful indicator. It combines your price and volume. कौन से प्राइस पे कितना वॉल्यूम आया, उसको फैक्टर को कंबाइन करके एक लाइन ये आपको ड्रॉ करके देगा। तो इसके बेसिस पे ट्रेड करना बहुत इजी है, एंड दिस विल आल्सो टेल यू द ओवरऑल ट्रेंड। नाउ फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट वीवैप इज दैट दिस इज ओनली फॉर इंट्राडे, ठीक है। आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए वीवैप नहीं देखते, उसके लिए एंकर्ड वीवैप आता है, ठीक है। वो इतना कॉमनली यूज नहीं है, बट आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रही हूँ कि जैसे इंट्राडे के लिए हम लोग वीवैप यूज करते हैं, वैसे ही पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए एंकर्ड वीवैप होता है। ओके, सो नाउ
What is VWAP? It's a trading benchmark that represents the average price a security has traded at throughout the day based on both volume and price. Okay. VWAP is calculated by multiplying the typical price by volume and then dividing by total volume. Okay, तो ये average price हो गया, volume weighted average price. ये इसका आपको एक line मिल जाता है, ठीक है? So what does VWAP indicate? VWAP से आपको क्या पता चलता है? First, price अगर VWAP के ऊपर है, if the price is above VWAP, it is a positive trend. All right. If the price is below the VWAP, it's a negative trend. All right. As simple as that. Now let's see an example. अब यहाँ पे ये मैंने निफ्टी के फ्यूचर का एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, द रेड लाइन दैट यू आर सीइंग इज द VWAP. ओके, सो ट्रेडिंग में या फिर ऑप्शन ट्रेडर्स जो होते हैं या फिर डेरिवेटिव ट्रेडर्स जो होते हैं, उनको एक टर्म बहुत कॉमन रहती है, बाय इन डिप्स या फिर सेल ऑन राइज, राइट? आप बहुत फ्रीक्वेंटली ये टर्म सुनते हो. तो ये टर्म्स क्या है? इसमें मैं आपको बाय इन डिप्स का एग्जांपल दे रही हूँ. तो जब भी मार्केट में ऐसे कोई पैटर्न्स बन रहे होते हैं, प्राइस का पैटर्न बन रहा होता है, तो आपको इस तरीके का एक पैटर्न प्राइस पैटर्न देखने को मिलता है. बट उसके लिए भी आपको बाय इन डिप करना है, लेकिन डिप के कौन से लेवल पे करना है, that is also very important, right? Even if you know that this is a buy and dip kind of a market, but you should also know where to enter in the dip, right? Correct, that is also very important. So this will help you in such conditions. तो अभी इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट में क्या हो रहा है, ये आपका VWAP है और प्राइस कंटिन्यूअसली आपके VWAP के ऊपर रह रहा है. यहाँ पे देख लो, प्राइस थोड़ा सा नीचे गया, वापस से जो भी रेड कैंडल बना था उसको पूरा कवर अप करके प्राइस फ्यूरियसली ऊपर आ गया. यहाँ पे थोड़ा नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया VWAP पे, ऊपर गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया. ऐसे ही इट इज टेकिंग मल्टीपल सपोर्ट्स ऑन द VWAP line, correct? So now what does it tell you? That it is surely the buy and dips market. Okay, now whenever you are seeing such kind of market, you can plan your entries near to the VWAP. All right, see, price is taking support at VWAP, indicating a positive buy and dips price action. All right, so इसमें ये तो 5 minute का चार्ट है, लेकिन you can see how beautiful is that price pattern, correct? So इसमें आप 1:1 या 1:2 दोनों भी, जो भी आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड निकल के आता है, उसके हिसाब से आप you can set your target and you can set your stop loss, but you can plan your entry points near to the VWAP level. All right, so this will give you the best kind of entries. So similarly, जब भी आपका प्राइस VWAP के नीचे है, ठीक है, तो नीचे होगा तब क्या होगा कि नीचे होगा, टॉप पे जाएगा, VWAP को टच करेगा, रेजिस्टेंस लेगा, वापस नीचे आएगा, वापस ऊपर जाएगा, टच करेगा, रेजिस्टेंस लेगा, वापस नीचे आएगा. सो ये जो आप पैटर्न देख रहे हो, इसके सिंपली अपोजिट प्राइस एक्शन, जो नेगेटिव मोमेंटम होता है या फिर जो सेल ऑन राइज होता है, उसमें आपको देखने को मिलेगा. सो these are the kind of entries, or these are the kind of trade opportunities that you can find out with the help of VWAP. ठीक है? So we have seen how to read the volume. We saw how to take the trend confirmation with the help of the volume. We saw how do we find the bullish momentum, how do we find the bearish momentum, how do we find if the price can take the resistance, how the price can take the support, or it can go the range bound momentum. We have seen all those 4 categories. Then we saw how do we trade the breakout and breakdown, and lastly हम लोग ने देखा कि VWAP के हेल्प से हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं, और how does the VWAP help us to plan our entries into the trade. Okay, so this is all in this particular webinar. If you have any questions regarding the topic, you can ask over here. All right, and if you have any suggestions regarding the topics which you want me to cover and which you want me to take the webinar upon, then that also you can suggest me. So
I will wait for the questions over here and I will try to answer most of the questions. Okay, there is a question. When the volumes are registered, we are doing analysis based on past data. To invest means we would have lost the initial benefit of the share price. Can't we estimate or catch scripts before the rise in the price? So I hope or I assume that this question is for the investment purpose. So generally, when you look at the stocks, especially cash stocks, जो मैंने आपको the concept I told you about the accumulation and the distribution that will help you in this particular case immensely. If you just observe whenever any particular stock is range bound for a very high period, and if you certainly suddenly observe high volume coming in, that means that it indicates the future upwards momentum. ओके, कैश स्टॉक्स में ये काफी हेल्पफुल पैटर्न है. ओके, कैश स्टॉक में ये आपको काफी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा. ऑलराइट, सो आई नो वॉल्यूम is a past data, but it is going to give you the indication for your future momentums as well. All right, so you have to look at the accumulation and distribution if you are into investment. That is the key to know the future momentum. Will you please share the PPT with participants? Sir, this particular webinar is being recorded, and there is a YouTube channel of HDFC Securities. So you can visit that YouTube channel, and there are all previous webinar recordings uploaded as well. There is a particular playlist created over there, and you will get this particular webinar also. The recording will be uploaded over there. You can access it anytime. How can we determine average volume of a stock? So there are a lot of indicators which will show you the average volume. Sometimes you also get a setting in which you can place the average bar into your volume bars. So you don't have to think by yourself. You get a lot of indicators to determine the average volume. Okay, so I have got a suggestion for ATR and stochastic indicators. I will try to cover up in next few webinars. Surely, thank you for the suggestion, sir. Where can we find the candlestick webinar to correlate the current information? You can, as I informed to all of you, that every webinar is uploaded on the YouTube channel of HDFC Securities. You can visit the YouTube channel and you will get the whole playlist of these webinars of F&O Chronicles. You will get, we have covered the
option chain analysis, we have covered price action, candlestick patterns, we have covered indicators, we have covered a lot of topics. Even how do we place the stop loss orders, that is also covered. So all important topics we have covered by now. So you can go and visit the YouTube channel of HDFC Securities and you will get the recordings. So I have got a question about VWAP. How to play option in VWAP. So whenever we are trading options, if we want to use the VWAP indicator, firstly we have to use it for the intraday purpose only. So if you are an intraday option trader, it will help you. Second thing, you can use it on the future chart of any, let's say if you are trading Nifty, so you can place the VWAP indicator on the Nifty future chart, all right, and the time frame which is perfect for VWAP is 15 minute. Okay, it will work on any time frame, but the 15-minute time frame is perfect or best for the VWAP indicator. It will give you very good results with the 15-minute time frame. And secondly, you can use that particular future chart with the help of VWAP as well. And let's say that if you're if you're going to trade 22,500 call, for example, okay, I'm just giving an example. So you can place the VWAP indicator on that options chart as well. So you will get the idea where to enter exactly. Okay, because आप जब निफ्टी को देखोगे तब क्या होगा कि निफ्टी का एक प्राइस चल रहा है, आपके ऑप्शन का एक प्राइस चल रहा है, तो आपको एग्जैक्ट वो प्राइस नहीं पता चलेगा. But if you place the VWAP on the option chart as well, you will get a clearer idea. Okay. How to identify breakout based on the volume. So इसका एक बेस्ट प्रिंसिपल है, जब भी आपका प्राइस ऊपर जा रहा है, इसके लिए आपको चार्ट पे है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स होने चाहिए, या फिर आपको एक बेसिक रेजिस्टेंस क्या है ये पता होना चाहिए, बिकॉज breakout will come above your resistance, right? So let's say that if you have a trend line drawn which is your resistance on your chart, all right, and if the price is touching that particular resistance and the volume is very high, okay, the price is also going up and the volume is coming up which is very high, there are chances that it is a good breakout and it will not, it is not a reversal, it is a good breakout. So you have to make sure that your price candles are green, they are going upwards, they are breaking the resistance on the chart, and your volume is also high. So that is the confirmation through your volume for the breakout. When volume and price both go down, is it support or bearish trend? When the volume is also going down and when the price is also going down, it means that, you know, if there was earlier bearish trend, now there will be some, flat momentum that will come. Okay, so it means that it will slightly take a support. उसके बाद क्या होगा वो आगे की बात है, मतलब हो सकता है कि थोड़ी देर तक मतलब थोड़ा मोमेंटम आपका फ्लैट होके उसके बाद एक रिवर्सल आ गया या फिर वापस से आपका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, वो आगे की बात है. बट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम it is going to take a slight support and it is going to go in a sideways momentum. It means that it is not a bearish trend. So Selvam sir has posted that, though I don't know Hindi, it was so clear because of your explanation both in Hindi and English. Your way of teaching is good and it was very useful. Thanks, ma'am. So thank you so much, sir. It's my pleasure to explain all these things to
the traders and investors. Okay, there is a question how to look for entry point for long term. I'm not an intraday trader. So I suppose this is for a stock and not for any derivative contract. All right. So first of all, you have to switch to a bigger time frame, which can be daily time frame, and you can take help. Likely we had VWAP for intraday traders, right? So you can take help of the moving average. Okay, so 100 moving average, 200 moving average are good for long term. All right. If you still want to have a very good confirmation from the moving averages also, you can combine two moving averages, which is your let's say 50 moving average and 200 moving average. Both of these are very good. So whenever your shorter moving average will cross above your bigger moving average, all right, so it will tell you a good breakout, or it will simply tell you that it is going to be a very good upwards momentum. Okay, so you can combine that with the volume if you are looking for long term trades or long term investments. So on a bigger time frame where you are not able to use the indicators which are for shorter time frame, you can make use of the moving averages. They are also very good, and the participation into those indicators from the traders community is also very good. So volume charts are available on the your chart screen only. All right, you don't have to go anywhere into invest right into HDFC Sky, everywhere into the app, into the web terminal. Whenever you are opening a chart, you can simply go into studies and put the volume chart, so that you can you will be able to see the volume into your charts. So the average volume to any stock, we cannot really define what is good average volume or what is bad average volume. It differs stock to stock. For अगर आप रिलायंस देखोगे तो उसका एवरेज वॉल्यूम काफी ज्यादा रहेगा. अगर कोई आप नॉट सो ट्रेडेड स्टॉक को देखोगे तो इट विल डेफिनेटली चेंज स्टॉक बाय स्टॉक. Okay, I'm getting a lot of suggestions for future webinars. Thank you so much to all of you who are suggesting the topics. So I'm not seeing any more questions. I hope I have covered most of the questions. And so we have these webinars every Thursday. And for that, we send you emails, we send you push notifications, we put the messages into our Telegram channel, which is HDFC Securities. So you can stay tuned for next webinars as well. And this is all in this particular session. So thank you so much for being a nice audience. So I hope to see you all next time as well. Thank you so much.